Hello, friends. This is Ashutosh, and today I'm going to discuss with you about the biggest scam in India's history, the mutual funds. हम सुनते आ रहे हैं कब से म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, सही है. यूट्यूब पे इतनी वीडियोस आपको मिलेंगी कि इतने की SIP कर दो, आफ्टर 20 years you will hit that jackpot of 50 CR, something like that. Correct? Mathematically it is correct. Mathematically it is correct. But today I'll talk with you about the practical aspects of mutual funds, whether is it possible or not, and what the scam is going on, which we all know but we tend to avoid. So देखो आप SIP करो 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 करो, after 30 years you'll hit that jackpot. But there are other aspects involved. म्यूचुअल फंड एक, मैं कहूँगा, एक गुल्लक की तरह है. आपका गुल्लक, उसमें आप पैसे डाल रहे हो, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू हैव टू टेक आउट द मनी फ्रॉम दैट. मे बी 100 केसेस आया आपके 30 years के टेंडर में जब आपको मनी निकालना है उसमें से, बट एंड इंटेंशनली यू मे अवॉइड 80 times, बट 20 times तो आप निकाल लोगे. यू हैव योर हाई एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, मैरिज, यू आर गोइंग टू टेक आउट बाय सम प्रॉपर्टी, हेल्थ इश्यूज, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो आपका वो म्यूचुअल फंड वो जैकपॉट 50 CR 100 CR नहीं हिट कर पाएगा कभी भी. व्हाट दिस यूट्यूबर्स एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज आर क्लेमिंग, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. एंड सबसे बड़ा पॉइंट एक्सपेंस रेशियो. ब्रोकरेज एंड एक्सपेंस रेशियो लेके 1.5 to 2% आई थिंक होता है. एंड इन 2030 गाइस इट्स गोइंग टू बी इन क्रॉस. इट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट विच यू विल बी पेइंग टू दिस म्यूचुअल फंड कंपनीज. मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. You buy a real estate of 1 CR, suppose, somewhere in India. You give a brokerage of 5%, maybe 5 lakhs to the brokerage broker. अब नेक्स्ट ईयर वो आपका प्रॉपर्टी 1.2 CR का हो गया, तो ब्रोकर आपके पास दोबारा तो नहीं आता ना कि नाउ दिस टाइम आई टेक 7 lakhs बिकॉज योर प्रॉपर्टी रेट हैज इंक्रीज्ड एंड समथिंग लाइक दैट. इट्स नॉट दैट एवरी ईयर द ब्रोकर इज गोइंग टू टेक मनी फ्रॉम यू. But these mutual funds houses, they're charging you every year 2% of expense ratio, including the brokerage. आपका म्यूचुअल फंड गिर गया तब भी, म्यूचुअल फंड उड़ गया तब भी, they are going to take out the money from you. And that's how they are surviving. These mutual fund CEOs, managers, they are having 60 CR per annum packages, guys, and they are taking the money only from you. So आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना है? I want to know. म्यूचुअल फंड्स क्या है? देखो, एक ही फंड हाउसेस के पास हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं इंडिया में. एंड आप जस्ट टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को आप देखोगे, यू गो थ्रू इंटरनेट एंड चेक आउट द स्टॉक्स कंपोजिशन दैट दे हैव, यू विल फाइंड आउट दैट लॉट ऑफ स्टॉक्स आर कॉमन. सो व्हाई यू कांट जस्ट टेक आउट द 10 म्यूचुअल फंड्स top performing and list down all the stocks composition that they have, and whatever the common stocks that are present in those mutual funds, you invest in that. You will not pay the expense ratio. You'll save a lot of money in future. This is one of the way I'm saying. Otherwise, you can go for the ETFs directly through stocks. This will save a lot of money in 20-30 years tenure, which you're avoiding. A lot of people know. SEBI even doesn't propagate this thing, but everyone knows about this expense ratio. But we are neglecting it. We are not knowing its impact. कंपाउंडिंग इफेक्ट को तो इन्होंने 8th wonder of the world डिक्लेयर कर दिया, guys. Yes, they have declared it as the 8th wonder of the world. अब इतना SIP डालो, compounding effect से after 20 years you'll hit the 40 CR. But is it practically possible? The answer is no. Okay? So मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स नहीं करना है. जो लोग मार्केट में नए हैं, they should do the mutual fund to understand what mutual fund is, how the market works, what stocks are. But after a certain period of time, you need to exit from that. There are other aspects also involved. Other investment asset classes are also there. Real estate is one of the best. आपको rich बनना है, then you have to invest in real estate. Mutual funds will never make you rich. This you need to keep in your mind. And अगर करना ही है, suppose mutual funds में करना ही है, then go for index funds. 50 आपकी निफ्टी 50 की कंपनीज हैं जो परफॉर्मिंग रहेंगी, दे विल बी इन दैट 50 क्लब, एंड दोज कंपनीज दैट विल नॉट परफॉर्म, दे विल लीव फ्रॉम दैट. So
I think that Nifty index fund is quite better if you really want to invest in mutual funds over a longer period of time, because the expense ratio is very less than 0.5%, and you're going to really save a lot of money by going for these Nifty index funds. So guys, think of that. I think these corporate professionals who have spent nearly 10 years in professional life, they need to come out of this mutual fund hangover and need to divert their money to other asset classes, maybe gold, maybe real estate is my favorite. I'll make a videos on real estate very soon, how it impacts the financial portfolio of people. This is all there, but I think clarity need to be there to people. Mutual fund houses तो एकदम पूरा marketing करा हुआ है. Why will they not do? They are getting money from you. Every year they are getting 2%. This is their source of income. So they will do. Mutual fund सही है and blah blah blah. I'm not totally denying that you should not do. You should do, but I've already explained for whom it is and in which classes you should do. I think the experienced professionals who are there, who have spent 10 years more in corporate life, they should try to get out of this hangover. Yeah, that's all I want to say. Thank you. Take care. Bye-bye.